Jai Sri Ram, everybody. Welcome to Bharat Yes, Marg, and yeah. we are so happy to be here today. In Karnataka, there is a massive thing happening in Shimoga district of Karnataka, and for one person was almost gone. One person gone, and four people are arrested. For what? Because they are tearing apart. See here, they are the Jihadi Congress is tearing apart Savarkar's picture, and they want to replace it with the mass murderer Tipu. Why? Because Hindus are affected, and it will please the jihadi gang. But anyway, before going further, from the land, son of the land, we will go to Dr. PV Patil and to say what is really happening in Karnataka. Every day 144. Yes, yeah, जय श्री राम, नमस्कार सभी को। दिलीप जी देखिए, जो ये हो रहा है कर्नाटक में हो रहा है, ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के दिन ये हो रहा है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। Little bit more louder. Yeah, maybe I'll increase my volume. That's fine. Okay. So it is very unfortunate that it is happening on the day of Independence Day celebration of 75th year. अब क्या बताया जाए? This is not the first time or something, but they find an occasion to show the strength, to send a clear message of what they're ultimately wanting to do. इसमें साफ मैसेज है सभी को कि अमृत महोत्सव का 75वें साल का जो आज़ादी का इस महोत्सव मनाया जा रहा है, उस दिन ऐसे दुर्घटना करते हुए बहुत खेद लग रहा है। और केवल ये कर्नाटक में सीमित नहीं, पूरे देश भर हो रहा है, बट खासकर कर्नाटक में इसलिए हो रहा है कि बिकॉज द कर्नाटका गवर्नमेंट इज द ओनली बीजेपी गवर्नमेंट इन दिस एंटायर साउथ, and they are standing very solidly against this appeasement politics. The Congress has been doing it for over the decades. So the idea is to send this government home and set the stage for the next elections. That is what is happening, because the next election is just 8-10 months away from now. So I think the whole game is being played out by the ecosystem, the Congress ecosystem, anti-nationals in hand in glove. Absolutely. Let's dive into the real issue. Okay, I will go to Narendra Ji before going. Thank you to you for coming and explaining the situation in Karnataka, which is very tensed at this time in Shimoga district. And friends, I will also let you know, friends, if you are here for the first time, please make sure to like the video, subscribe the channel, and also press the notification bell. And it's your support that keeps us going, So please do join hands with us. Let's stay against the enemies of Hindu and Hindustan. Okay. Now let's go to Narendra Ji. What is happening here really? Comparing Tipu, who, to escape his head, he gave his son to British. We have done the video of this. People can go and see it if they want. He said, please leave me alone. I will give my son to you. Like that, he handed over son. So for that coward, you are comparing the bravest of the bravest who gave it all for Bharat. दिलीपन जी, actually they are trying to compare. वो कंपेयर करना चाहते हैं, बट कंपेयर हो नहीं सकता है। दे वांट टू कंपेयर, बट कंपेयर हो नहीं सकता है, क्योंकि सावरकर जी की हाइट के आसपास भी टीपू नहीं है। टीपू एक जिहादी है, इसलिए जिहादी लोग उसकी सपोर्ट में खड़े हैं। इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। जैसे जैसे राष्ट्रवादियों के बारे में इंफॉर्मेशन बढ़ेगी, जैसे जैसे राष्ट्रवादियों का सम्मान अब बढ़ेगा, इन सबको भी पता है कि अब सावरकर जी को भी भारत रत्न की डिमांड उठ रही है। चारों दिशाओं से प्रेशर है सरकार पे। वैसे वैसे ये जिहादी
उसका विरोध करने के लिए खड़े हो जाएंगे। इन लोगों ने तो अमर जवान ज्योति को भी बॉम्बे में नहीं छोड़ा। तो ये सावरकर जी के पोस्टर तो दूर की बात ही है। ये इनका चरित्र है, इनके यही नॉलेज है, यही इनके दिमाग में है। बट आप घबराइए ना, सावरकर का जब विचार उठेगा ना तभी हिंदू राष्ट्र बनेगा। हर क्रांतिकारी के पीछे अगर विचार है, आप स्टडी करेंगे, जब कोई भी क्रांतिकारी देखेंगे, सिर्फ हिंदू महासभा नहीं, सुभाष चंद्र बोस जी के विचार देखेंगे, क्रांतिकारी हरदयाल जी के विचार देखेंगे, सबके पीछे, क्रांति के विचार के पीछे सावरकर जी का विचार है। सावरकर जी का विचार आज उठने लग गया है। जिहादियों के पोस्टर फाड़ने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि हिंदू जाग रहा है। और गांधी से सोच अब बदल के हिंदू की सावरकर की होने वाली है, जो अल्टीमेट है, जो एवोल्यूशन ऑफ हिंदुइज्म है। ये हिंदू एवोल्यूशन जो है वो सावरकर जी से हुआ है। ही डिफाइंड हिंदुइज्म। तो अब जब ये हिंदुइज्म सावरकर जी की तरफ मुड़ेगा विचारधारा, इन जिहादियों को मिर्ची और ज्यादा लगने वाली है, और इस चीज का हमें कोई परवाह नहीं। इनके पोस्टर फाड़ने के ड्रामे से कुछ नहीं होने वाला है। टीपू सावरकर जी के धूल के बराबर भी नहीं है। टीपू ने जो कुछ किया अपने राज को बचाने के लिए किया। टीपू ने अंग्रेजों के सामने नाक रगड़ी अपनी, और अपने बेटे बच्चों को उनको सौंप दिया उनसे बचने के लिए। अरे ये ऐसे लोग जो अपने बच्चों को सौंप सकते हैं, तो भारत को क्या रक्षा करेंगे? And tens of thousands of people were massacred to convert the women. They kidnapped, women were kidnapped. Okay, in Melkote, Karnataka, a must-visit place. Where Deepavali never being celebrated. But you are absolutely right. Let me go to Patil ji, and I'll ask him one thing. Patil ji, compare the Vichardhara of what Congress is talking about, and what see, when Babiji of Savarkar writes a letter to Savarkar, okay, she says, why our family? She got kicked out of the home, okay, because she couldn't pay the rent. She is writing a letter, why us? And Savarkar ji writes from Kalapani. He says, you know what, if everybody has to eat the freedom of freedom, enjoy the freedom, somebody has to become the firewood. And our family wantedly, willingly became that firewood. So we never asked that question, why us? This is a one side Vichardhara. And the other side Vichardhara is, tens of thousands of people were massacred just to convert them into Islam. In Melkote, where Deepavali never gets celebrated. Okay, how is this comparable? You are in Karnataka. Please compare. Well, absolutely, there is no comparison. इसमें कंपेयर करने के लिए कुछ है भी नहीं। जैसे नरेंद्र भाई ने बताया, ये कंपैरिजन क्रिएट किया जा रहा है आर्टिफिशियली टू कंफ्यूज पीपल, क्योंकि अगला 8-10 महीनों में इलेक्शन आने वाली है और कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि करप्शन के अलावा उसके अचीवमेंट मैं तो सोचा ये लिंगायत बन गए, पप्पू भाई दीक्षा लेके वो एक उसके लिए एक अलग से हमें और चर्चा करनी पड़ेगी। उसमें हमारे जो फार्मर चीफ मिनिस्टर साहब थे, उनका क्या पीछे वो रोल रहा, और जो हमारे जो विराट भाई, उनके जो गुरु है, जो अभी राज्यसभा से मुक्ति मिली उनको, उनके पीछे पिछवाड़े में क्या काम हो रहा है, वो उसके लिए अलग से एक प्रोग्राम करनी पड़ेगी। एब्सोल्युटली, आई एग्री। तो मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, मैं केवल और केवल इसकी बात कर रहा हूँ कि कांग्रेस का जो टोटल मुद्दा है, हमें 2023 की जो इलेक्शन आने वाली है, स्टेट इलेक्शंस, उसको क्या मुद्दा, क्या प्लेटफॉर्म, किस प्लेटफॉर्म पे हम लड़े? क्योंकि बीजेपी इतने अच्छे राजनीति कर रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, कोरोना मैनेजमेंट हो गया, सब कुछ हो गया, इकोनॉमी अच्छा हो रहा है, सबको मतलब
देश के नहीं बल्कि हर एक स्टेट का जहां जहां बीजेपी राज कर रही है अच्छा खासा डेवलपमेंट हो रहा है. अब कांग्रेस के पास क्या है? They don't attend assembly sessions. Even if they do a lot of ruckus. They won't allow any democratic discussions to happen. They either create ruckus or walk out. So bills are getting passed anyway. It is good one way. But अब अगले आने वाले इलेक्शन में उनको क्या मुद्दा है? कुछ नहीं है. Absolutely. But the only मुद्दा the Congress is famous for is the bloodbath. They want to create a bloodbath so that people get fed up. यार जब भी बीजेपी की सरकार आती है साला यहाँ पे यार मगजमारी होती है, छोड़ो यार इस बार कांग्रेस को छोड़ दे. So this is a standard playbook that they have been doing it for many decades. You see, whenever Congress lost an election, including the emergency, this is what is happening. Yes. Absolutely. You look at every election that they won. Absolutely. But how the people of Karnataka seeing this comparison? जैसे नरेंद्र भाई ने बताया, it is helping people unite. Okay, we lose one or two people. अभी रिसेंटली एक हिंदू कार्यकर्ता का मर्डर हुआ, कल भी हुआ है. आज एक अनजान व्यक्ति का जो मतलब इससे कोई लेन देन नहीं था, एक मारवाड़ी लड़का, उसको बहुत बुरी तरीके से उसको स्टैब किया गया है एंड ही स्टिल फाइटिंग फॉर हिज लाइफ. सो ये चीजें होती रहेगी. दिस हैज बीन हैपनिंग फॉर it's not one off thing. It's been happening. It was happening even during Congress time also. People were doing then also, but it's being highlighted that Mama is not doing anything. आज देखो उस जिस बंदे ने इसको स्टैबिंग किया उसको गोली मारा गया है. He's been hurt. He's been admitted now. 3-4 fellows have been arrested. So it is not something that it is happening. It's being focused by media that it is happening in BJP ruled state so that government can be suspended. People get fed up with BJP government. And all the developmental work, all the good things that government is doing should be forgotten, should never be in the front face. Absolutely. How do you compare, Narendra Bhai, compare the mass murderer versus a selfless soul? कोई कंपैरिजन ही नहीं है. ये कंपैरिजन इनके पास एक्चुअली कांग्रेस के पास कुछ है ही नहीं. अब ये पुराने कारतूस चले हुए कारतूस चला रहे हैं, वो अब चल नहीं सकते. अब हिंदू समझ गए हैं. आप अपना म्यूट में लगा लीजिए पाटिल जी, म्यूट में लगा लीजिए. अभी हिंदू लोग समझ चुके हैं, वो जाग रहे हैं, वो अभी बेवकूफ नहीं बन सकते हैं. चले कारतूस है, ये टीपू वगैरह चला हुआ कारतूस है. अब ये चलने वाला नहीं है. इसकी सच्चाई जो है, इसका ट्रुथ जो है, वो सभी लोगों के सामने है. और जो सावरकर की आंधी चलने वाली है, वो ये रोक नहीं सकते हैं. सावरकर को कोई रोक नहीं सकता है. थोड़े समय के लिए इन्होंने कोशिश करी है रोकने की, पर सावरकर की लहर अब उठ चुकी है. सावरकर इनसे रुकेगा नहीं. सावरकर जो है वो चिंगारी है, चिंगारी क्रांति की. सावरकर जो है वो हिंदुत्व की एनर्जी है, एनर्जी. इन मूर्खों को ये पता ही नहीं है. ये सावरकर को जानते नहीं है. अंग्रेज सावरकर को जानते थे, इसलिए डरते थे उससे बड़ा. और उन्होंने बहुत कोशिश की कि सावरकर को किसी तरीके से खत्म कर दें. ना तो सावरकर को वो खत्म कर पाए, और सावरकर की विचारधारा को तो ये खत्म ही नहीं कर सकते. वो विचारधारा तो अब उठने लगी है. ये लोगों के सामने आएगी और एक क्रांति बनेगी. यही क्रांति को जन्म देगी. अगर वर्ल्ड हिंदुस्तान में कोई क्रांति ला सकता है तो वो सावरकर का विचार ही है सिर्फ. Only theory of Savarkar can bring some revolution in India. Absolutely. There is no other theory of revolution presently exist in India. There is only theorem of Gandhiism, which has brought division of a country. And one now the time has come. Now the time has come. The India has to become the Vishwa Guru. India has to lead the Vishwa. So the absolutely theorem of Savarkar is required. Absolutely. For the Savarkar is the future. Savarkar is future. Absolutely. For the benefit of the viewers, I want to say you, friends, if you really want to know the true history of Mr. Savarkar, Veer Savarkar, Vinayak Damodar Savarkar, you should read the book of Dr. Vikram Sampath. Okay? And the way the lobby attacked him was unbelievable. You should read.
because it's a good investment. And if we They don't are traitors. Actually, the people who attacked Savarkar, they are traitor. They were hand in hand with the British people. absolutely, they are black Britishers. you ये know, काले अंग्रेज लोग हैं. इन्होंने सावरकर की सोच को दबाने की कोशिश की, क्योंकि सावरकर की सोच इनको पता है कि वो भारत को विश्व गुरु बना देगी. definitely, तो ये please दबेगा नहीं. read the book, friends. Please read the book, buy the book of Dr. Vikram Sampath on Vinayak Damodar Savarkar. Please read it, and to understand who he is and why the ecosystem is even today is afraid. Think about it. If these people are afraid today after death of him for this many years, दलीपन what जी, would have the British done? दलीपन जी, ये इकोसिस्टम समझ चुका है. ये इकोसिस्टम समझ चुका है कि सावरकर का विचार उठ रहा है. सावरकर के टक्कर इनके पास नहीं है. इनके बाप के पास भी नहीं थे, अंग्रेज के पास, इनके पास भी नहीं है. बिल्कुल, They बिल्कुल. don't have any method to control Savarkar. Absolutely, absolutely. And what do you have to say? Your last thoughts on the whole thing, Patilji. Well, I think it is going the direction. Basically, they are playing into the hands of their own, the ecosystem, the anti-national ecosystem है, जो anti-BJP, anti-Hindu राष्ट्र जो forces है, they are setting a trap for themselves. They are walking into the trap set for others. They themselves are walking into it. It's a matter of time before the trap becomes so big and they will all fall into it one after the other. जैसे बाकी राज्यों में हो रहा है, ऐसे ये खुद फंसते जाएंगे. Absolutely. I think 2023 will be a thumping majority for BJP in Karnataka, and ये silent majority भूलती नहीं है. Definitely. I want to say the people, before we go further, friends, we teach Sanskrit at Bharat Marg online for no age limit, so anybody can join. If you want to register, send us a WhatsApp to +1 647 964 4790, and also you can become a member now with the Bharat Marg and become part of all the good deeds we do, including Go Seva, Godan, Annadan, and Havan, Puja, etc., and become a practicing Hindu. And also you can support Bharat Marg, and you can also take pilgrimage with us, a private pilgrimage organized by Bharat Marg, and send us +1 647 964 4790 WhatsApp for more questions. But before that, to take the last words from Narendra Bhai, what you have to say at the end? No, I have already said. Tipu and Savarkar. Nothing to it. I want to say here, there is no future of persons like fabricated persons like Tipu. Tipu is a jihadi. There is no place of jihadis now in India. One second. Sorry to interfere you. 1 second. Narendra Bhai, what the Congress government did there in Karnataka is unbelievable. To demean Krishna Jayanti, they started celebrating Tipu Jayanti. Can you believe this? वो अभी कांग्रेस की ये तो जयंती मना रहे हैं, कांग्रेस की 13वीं बन गई है इसके चक्कर में. इसी के चक्कर में कांग्रेस की 13वीं हो गई है. ये समझ नहीं सकते अब सावरकर के स्ट्रेंथ को और सावरकर के माइंडसेट को और फॉलोअर्स को. ये सब करतूते करने से सावरकर का तो प्रकाश में आ रहा है. आज आप और मैं डिस्कस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग डिस्कस कर रहे हैं, लोग स्टडी कर रहे हैं सावरकर को और जान पा रहे हैं सावरकर क्या चीज है. और जब हिंदू सावरकर को फॉलो करेगा ना, आप चेंज देखना इंडिया में क्रांति कैसे होती है, आपको दिखेगी. अभी यू विल सी द क्रांति. एब्सोल्युटली. यस पाटिल जी, मैं कह रहा था कि जिन्होंने ये जयंती वयंती बनाया और किए हैं, नाउ आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, दे हैव लास्ट 23 स्टेट इलेक्शंस. और इनका जो टीवी सीरियल बनाने वाले का क्या हुआ, he got burnt himself with 65% burn injuries. 92 लोग मर गए उसमें जी. और इसको कितने सर्जरी हुए उस आदमी को जिन्होंने टीवी सीरियल बनाने गया. अच्छा, वो हमारे भाई साहब आए थे, वो मल्ल्या साहब, वो खड़ग लेके आए थे वो म्यूजियम में, ब्रिटिश म्यूजियम से. क्या हुआ उसको? तो फिगटी की तरह घूम रहा है आजकल इधर उधर.
और जो पुराने जो मतलब जो पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, उन्होंने भी जयंती मनाया, क्या हुआ उसका? ये लास्ट फॉर एवर, है ना? अभी उसको खुद के अपने पार्टी में एक जगह नहीं है, स्थान नहीं है, आए झगड़ा करते How रहते is हैं। Patil ji? How in the world somebody can, in competition to Krishna Jayanti, you will start Tipu Jayanti? Man, the blood doesn't boil. You became so sold out. वेल इसी जन्माष्टमी एक पूरा नेशन का एक त्योहार है, उसके लिए एक राज्य के लिए अलग से आप राजा घोषण करें, ये करें वो करें, थोड़ा सा अभी फिलहाल एक कंट्रोवर्शियल सिचुएशन हो सकता है। ये दिलीपन जी कांग्रेस कांग्रेस वाले तो बहुत ज्यादा गिरे हुए हैं, अभी तो इनका कितने गिरे हुए हैं और आपके सामने आएगा। ये लोग इतने ज्यादा गिरे हुए हैं कि आप सोच नहीं सकते, दिस इज बियॉन्ड योर थिंकिंग। ये लोग इतने नीचे गिर चुके हैं, बिल्कुल, इट इज बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन। जी जी बिल्कुल। सो अभी फिलहाल सिचुएशन थोड़ा सा फ्लूइड चल रहा है, तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि इसको कितना अपने न्याय के जो चौकट है उसके अंदर कितना इसको मैनेज किया जा सके, वैसे कर रहे हैं। डज नॉट मीन दैट गवर्नमेंट इज बैकिंग डाउन और बेंडिंग और नीलिंग डाउन, ऐसा कुछ भी नहीं है जो बताया जा रहा है मीडिया में, वो क्रिएट किया हुआ है इस तरह। बट गवर्नमेंट इज प्योरली गोइंग विद द प्ले बुक और द रूल बुक, एंड they will go after everyone. You watch, Absolutely. wait and watch. I just योगी मॉडल आप जो कह रहे हैं ना, सब लोग we are going in that direction, but हर एक चीज के लिए एक step by step process होता है। Absolutely. As a law has been shot yesterday is the proof that the government is going after it. Absolutely. The person who stabbed the Hindu there in Karnataka has been shot by the police of Karnataka. That's what Patil ji says. And you know what, folks? Please buy Dr. Vikram Sampath books, and you have to read Vinayak Damodar Savarkar. There is no way to do justice about what he did in just 20 minutes of discussion. Any revolutionary you take off that time through his Abhinav Bharat Sangh society, he made the impact on Madan Lal Tingra or anybody you name it. Bhagat Singh, anybody, whoever landed in London. Subhash Chandra Bose, even Subhash Chandra Bose. Absolutely. There was no revolutionary, no true freedom fighter who didn't meet Savarkar and got inspired, folks. Like Narendra Bhai exactly said, if he inspired that day, he is inspiring today too. It is so incredible. Thanks for a wonderful discussion, and looking forward to talk to you again. And please make sure, friends, like, subscribe, and press the notification button and stay connected. Thank you, Narendra Bhai. Thank you, Patil ji, for our input and our time. Hare Krishna, Hare Krishna.